the bloodshed of 26 innocents in Pahalgam could be so blatantly used to paint a political narrative. I'm Sagarika Mitra, and in this newscast, I'm going to take you through the politics that's unraveling over the Kawad Yatra. It's been just 2 months since Pahalgam happened, and now there is the opposition which is using Pahalgam to attack the Bharatiya Janata Party over the Kawad Yatra. And the target of their attacks is the orders that have come in from Uttarakhand and the Uttar Pradesh government, making it mandatory for eateries on the Kawad Yatra route to prominently display their food licenses and registration certificates. The directive saw members of certain Hindu organizations checking the identities of the staff at restaurants and at food stalls. This for Samajwadi Party leaders like S.T. Hasan and Ravidas Mehrotra are similar to what terrorists did in Pahalgam on the 22nd of April. Listen into the comments. कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटे उतरवा के देखे? तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटे नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? My colleagues Mohit and Adib are joining us live on this broadcast. Let me go across to Mohit. Mohit, yesterday it was S.T. Hasan. Today it is another leader of the Samajwadi Party and a senior leader at that. It seems like, they have full endorsement for the kind of comments they are making with regards to the Kawad Yatra. Yes, their attacks are aimed at the Bharatiya Janata Party. But look at the larger narrative. Words like terrorism, words like hatred, an attempt to draw a parallel between what happened in Pahalgam is being done repeatedly. So what's the larger motive? And does Akhilesh Yadav endorse the comments made by both S.T. Hasan and Ravidas Mehrotra? Well, that's $1 million question, that whether Akhilesh Yadav endorses the statement that have come in from Ravidas Mehrotra and S.T. Hasan, because Ravidas Mehrotra is an MLA, and we know for a fact that S.T. Hasan is a senior Samajwadi Party leader and former member of parliament. So these are two senior leaders of the Samajwadi Party who are indulging in Sanatan slander that is being said by the BJP. Now, BJP has also attacked the Samajwadi Party, saying that anti-Sanatan mindset prevails in the mind of the Indie Bloc parties, specifically the Samajwadi parties, because on 2 consecutive days we have seen such statements coming in from 2 of the senior leaders of the Samajwadi Party. And as you rightly pointed out, now even after slandering Sanatan, they are not stopping. They are driving parallels between what has happened in Pahalgam, the Pahalgam terror attack, and what's happening during the Kawad Yatra route, where the profiling of the shops is being done. But that has been done from past 2 to 3 years, because the government does not want any untoward incident, and perhaps that is why they're asking for the identities. Now, the BJP and the government also in these states say that what's wrong if somebody has to produce their ID? Why? And there have been many cases where people have used fake IDs to run the eateries on the Kawad Yatra route, which has led to several incidents, and perhaps that is why no untoward incident happened. These steps are being taken. But what we see is that anti-Sanatan mindset of the Samajwadi Party. This is what the BJP says, and the BJP also says both in that the now, states of even Uttar Pradesh and Uttarakhand, after facing criticism from the opposition, Mohit, have given reasons as to why they've come out with a directive which mandates, you to put your name and your licenses on your shops. But now, to equate it to what happened in Pahalgam, to repeatedly fire the jibe of, terrorism, terrorists, hatred, vandalism, painting the Kawad Yatra in that way, is that, the agenda of the opposition? Because let's take you through the attacks that have come in. S.T. Hasan of the Samajwadi Party says that Kawad Yatris, or the attempt to, check people, check their identities, especially those who have shops during the on the route of the Kawad Yatra, this is equated
equating them to terrorists. Then you have Ravidas Mehrotra today, a fresh attack. He says for the BJP that goes ahead and checks caste and creed, it is nothing different from what terrorists of Pahalgam did. Then you have Digvijay Singh of the Congress party who says Kawad Yatra is spreading hatred. So these are the kind of comments coming in from the leaders of the opposition. So the Kawad Yatra has been linked to terrorism, to hatred, to vandalism, and the attempt is to draw parallels with terrorists who killed innocents in Pahalgam. After S.T. Hassan, Akhilesh Yadav's MLA Ravidas Mehrotra says that there is no difference between BJP and terrorists. His comments on expected lines have sparked off a war of words with the Bharatiya Janata Party, accusing the INDIA of exposing their anti-Sanatan mindset. समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन पूर्ण तरीके से बिगड़ चुका है और चुनाव हारने की और बिहार में चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन में अब समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही। पहले कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं, उनकी तुलना आतंकियों से कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी इक्वल्स टू टेररिस्ट। बीजेपी की तीसरी बार कंटिन्यूसली सेंटर में सरकार बनी है। क्या जनता ने टेररिस्ट को वोट दिया? ये जनता के विवेक का अपमान है। राकेश त्रिपाठी of the Bharatiya Janata Party is joining us this morning. राकेश जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आपकी पार्टी, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेताओं को टेररिस्ट से इक्वेट किया है। उनका ये मानना है कि जो पहलगाम में हुआ, जो आतंकवादियों ने वहां पे किया, और आप लोगों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? पार्टी के सांसद वीरेंद्र मलिक पहले कांवड़ियों को हिंसक बताते हैं कि वो हिंसा करते हैं, उसके बाद एसटी हसन ये पहलगाम के आतंकियों से तुलना करते हैं, और अब समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा बीजेपी के वर्कर्स को आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं। ये एक पूरी तरह से उनकी मॉडस ऑपरेंडी दिखाई पड़ रही है कि कैसे हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार को, सावन के महीना जो बहुत पवित्र महीना होता है, जिसमें कांवड़ यात्री अपना जल लेकर के महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए जाते हैं, पवित्र भावना के साथ, एक कठिन साधना के साथ, कैसे इसको अपमानित किया जा सकता है, कैसे इसको लेकर के विवाद खड़े किए जा सकते हैं और कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता है। इसके लिए लगातार एक के बाद एक लगातार बयान दिए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के इशारे पर ये सारे बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक सपा सुप्रीमो ने न इन बयानों को गलत ठहराया है, न समाजवादी पार्टी ने कोई इस पर कार्रवाई की है। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और ये बड़ी रणनीति इंडिया अलायंस की है। नहीं, और इस रणनीति के पीछे का मोटिव क्या है? आप कह रहे हैं कि ये सब प्लान्ड है, स्ट्रेटेजिकली ऐसे कमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसको खंडन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है दिस हैज एंडोर्समेंट। पर why is it that they are resorting to this kind of commentary with regards to the Bharatiya Janata Party or the Kawad Yatra or even Sanatan Dharma? नहीं, इसका एक ही मोटिव है, मजहबी तुष्टीकरण। कैसे हिंदुओं को अपमानित करो, सनातन को अपमानित करो और इसके साथ में एक मजहब के वोटों की गोलबंदी इकट्ठा करने का प्रयास करो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहा करती थी तो किसी कांवड़ यात्रा पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे, डीजे बजाने पर रोक लगाई जाती थी, कांवड़ यात्रा में तमाम प्रकार की मुश्किलें खड़ी की जाती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कांवड़ यात्रा को पूरे जोशो खरोश के साथ, जिसमें आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, जिसमें पूरे उमंग और तरंग के साथ आज कांवड़ यात्रा संपन्न होती है, ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे जो हमने नियंत्रित करने का काम किया है, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और अभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा खड़ा किया जाए और कैसे मजहबी वोटों की गोलबंदी की जाए, इसके लिए जानबूझकर किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। थैंक यू राकेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सो द भारतीय जनता पार्टी इज accusing the opposition and the INDIA bloc, one, of appeasement politics, and number two, they are drawing the Bihar link. They're saying that this is an attempt, a well thought out attempt by the opposition to ratchet up a narrative ahead of the Bihar elections because they are sensing defeat. The political war of words continues, but let's come back to the real issue. Why are these checks needed? Why is there such a huge row over Kawad checks? It is because there have been instances in the past where food outlet owners were hiding their identities. There have been examples like the Kanasham restaurant,
The board of the restaurant once gave an impression that it has been owned by a Hindu, a place that pilgrims observing certain rituals can trust. But when one looked through and saw the name that was displayed on the payment scanner, it turned out to be that of a Salman Qureshi. Last year too, there were similar instances of name fakery that were reported. And now the Uttarakhand Chief Minister has also said that this step has been taken to ensure that there is purity, because there are fast rituals that are followed by Kawad Yatris. Leaders of the opposition are not willing to digest this version from the state governments of both of Uttar Pradesh and Uttarakhand. So from Congress to AIMIM to ST Hassan of the Samajwadi Party, all are echoing the same kind of intent. But listen in to how the war of words is playing out between both leaders of the opposition and the Bharatiya Janata Party. क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया कि नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? My colleague Adeep stays with us. Adeep, so you heard the comments that have come in from both the Samajwadi Party and the Bharatiya Janata Party. Here there is a question that why is it that repeatedly there are leaders of Akhilesh Yadav's party who are deliberately trying to draw in the Pahalgam parallel. What is the urge to, politically target the BJP by raking up Pahalgam and by bringing it into the Kawad narrative? What's the larger motive? That's the question that's being asked. Well, definitely, Sagrika. See, the BJP is now alleging that it is all being done on the directions of Akhilesh Yadav, and Samajwadi Party leaders are constantly making these kind of remarks. First, it was ST Hassan, who's the senior leader of Samajwadi Party, and now we have Ravidas Mehrotra, who is again a senior leader of the Samajwadi Party. He is the former cabinet minister of Uttar Pradesh, and he goes on to compare BJP with the terrorists. Now, the BJP says that it is all being done to insult the Sanatan festivals and for the appeasement politics. Now, Sagrika, what's the need for the checks behind the motive behind the Uttar Pradesh government is that of that the identities should be revealed, and in fact in the recent case of Muzaffarnagar, where a group went on to check in a particular dhaba, the name of the dhaba was Pandit Vaishno Dhaba. Right. When the group questioned the manager, his name was Gopal. He said that my name is Gopal, but when his Aadhaar card was checked by our crew on ground, his name happened to be Tajarmul. So this is the need. The government says that this is why we are carrying out such drives for the nameplates in the state of Uttar Pradesh. All right. Thank you, Adeep, for breaking it down and for getting us that story into perspective. With that, viewers, it's time for us to take a short commercial break. We'll be back with more news and updates. Stay with Times Now.